अब इसमें कॉमन चीज क्या है? व्हाट इज कॉमन इज बोथ आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव. लेकिन इसका कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है? दो वर्ड्स अलग क्यों है? दोनों का स्टेटस अलग है. ठीक है, तो सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? डेलीगेट करना मतलब किसी को ट्रांसफर कर देना. यू हैव ट्रांसफर द पावर. ठीक है, तो लॉ मेकिंग पावर is primarily whose function? Legislator's function. Fine. But the functions of a state have increased so much in modern times that Parliament hardly makes law. Parliament only passes the law. ठीक है, तो in original or in real sense executive make laws and parliament just pass the law, scrutinize the law, deliberate the law. ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि you have to bring a particular law. Fine. And if you talk about India or a parliamentary system, majority of law is made by government only. ठीक है, तो minister introduces the law and then there are 3 stages in the formulation of law. तो minister introduces the bill, तो first stage में क्या होता है? General discussion on the principles of the bill. When general discussion is over and parliament approves things in principle, then executive drafts the bill in detail. तो असलियत में कानून तो कौन ही बना रहा है? एग्जीक्यूटिव. So this is called as delegated legislation. Is delegated legislation and subordinate legislation same? No. In fact, subordinate legislation will be appended to delegated. Delegated legislation and normal law में कोई difference नहीं. क्यों नहीं है difference? क्योंकि डेलीगेट जो ये पार्लियामेंट बिल जो है वो पार्लियामेंटेरियंस नहीं लाते हैं, गवर्नमेंट ही लाती है. तो ये बिल लॉ बन जाएगा. इस लॉ का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्शन लेवल पे होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये हो गया अपना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो पहले हम देखेंगे concept of delegated legislation. What is the concept? ठीक है, तो delegated legislation and delegated legislation पहले समझ लो is not a feature of presidential system. Do you know presidential system and parliamentary system, form of government में I'll tell. In presidential system executive is not a part of legislature. So executive doesn't make law. They may make subordinate laws, but they don't make law. But in India or in a parliamentary system, executive is a part of legislature. Executive enjoys the confidence of the lower house. So is it all right if someone enjoys the confidence of me? Is it all right if that person exercises power on behalf of me? Fine. So delegated legislation is a feature only of parliamentary system. Why in parliamentary system? Because executive is accountable to legislature.
What is the need of delegated legislation? There are so many bills to be passed. Fine. Plus MPs elected for 5 years. They may not be expert in knowing the nitty-gritties of a particular policies. So practically speaking, the role of parliament is limited to the general discussions. Then the real function of parliament is scrutinizing the bills, not proposing the bills. So scrutiny of a bill takes place where? In committees. So what is the real, where parliament plays the real role? Committees. Committees का बहुत बड़ा importance है. Without efficient committee system, can we have executive accountability? नहीं. तो इसीलिए कहा जाता है Parliament in session is just for display. Parliament in committee is real. वैसे तो ये अमेरिका का एक सिस्टम है. अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस इन सेशन इज जस्ट डिस्प्ले एंड कांग्रेस इन कमेटी इज रियल, इज कांग्रेस एट वर्क. इंडिया में होना चाहिए लेकिन कहते नहीं. क्यों? क्योंकि यूएस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग efficient committee system, but India has a very weak committee system. There is no regularity in the constitution of the committees itself. A very important committees to ensure the accountability is the concept of departmental standing committees. But present government had not even constituted such committees. It means parliament is only on display. Parliament doesn't work. And even if parliamentarians are working in the committee, the problem in India is what? The parliamentarians do not have enough training. In India, we always lack in training and capacity building because we are lacking in terms of resources. Fine. So this is called as what? Decline of parliament. India's democracy is parliamentary democracy. But out of the 3 institutions, which institution is in the state of rot? Parliament. That itself brings a question mark on democracy in India. Do you think India's democracy keeps under questioning time and again? But when the Western countries, they are also very smart. When they criticize, they touch on our weak point. They will always talk about minorities are not protected. But the real problem of democracy is lack of efficient functioning of parliament. ठीक है? Leave the politically volatile issues of minority majority. The way the institutions should have been performing, they are not performing. So bills are passed without discussion. Bills are passed without scrutiny. Forget the bills. Budget is passed just like that. ठीक है? तो this is a very probable question. Decline of parliament, decline of democracy. लेकिन we should not write decline of democracy in terms of hate or in terms of violence against minorities. That's a political matter. Fine.
and the data is not so big that Obama and others have to have a problem. But where is the real problem? The way institutions are functioning. ठीक है, out of which the biggest problem lies in functioning of parliament. Another basic problem lies in judiciary, excessive delays, lack of transparency in the appointment. Problem lies in institution of election commission, on which lies the parliamentary democracy, your right to vote. तो तुम पॉलिटिकल मैटर्स नहीं डिस्कस करने हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. सबसे पहली तो इंस्टीट्यूशंस शुड वर्क प्रॉपरली. एवरी इंस्टीट्यूशन, CAG needs reform. Can you write an essay on decline of parliament या decline of parliamentary democracy? आ रहे कुछ दिमाग में, कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल लास्ट हमने ये समझना है prelims के लिए, that we should not get confused between subordinate legislation and delegated legislation. तो what exactly is a delegated legislation? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखते हैं कि delegated legislation means a situation where, yes, ma'am, what is the status of ordinance in respect to delegated? Ordinance in India? Yes. Ordinance is a temporary power of executive to make law. लेकिन ऑर्डिनेंस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं कहा जाता. ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉ when parliament is not in session. तो ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप समझ के रखिए कि will you call ordinance subordinate legislation? Subordinate बस समझना है, for facilitation समझ लो. Will you call ordinance a delegated legislation? नहीं. ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन हो गई टेम्परेरी लॉ. ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के साथ पढ़ने की आदत है आपको, या जो भी ज्ञान दिया जाए बस उसको स्वीकार करने की आदत? तुम लोग उपदेशात्मक शैली प्रेफर करते हो कि डायलेक्टिकल? डायलेक्टिकल. नॉलेज कैसे आएगी? डायलेक्टिक से. गुरुजी आए, शिष्य ने लिखते गए और घर पे रटते गए. विल इट वर्क? नो. तो इसमें तो नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज, यू शुड बी शार्प लाइक द लॉयर्स, यू शुड हैव द क्लैरिटी. तो ऑर्डिनेंस को पकड़ना है तो टेम्परेरी से पकड़ लो. सबऑर्डिनेट को पकड़ना है तो फैसिलिटेशन से पकड़ लो. और डेलीगेटेड को पकड़ना है तो proliferation in the work and specialization, that you can't expect a parliament which is meeting so rarely or so less is capable of bringing the amount of laws which a country requires. अब इसमें कॉमन चीजें क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री? रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव. बट एवरी सिस्टम जस्ट बिकॉज एग्जीक्यूटिव ने बनाया तो सब एक ही है, तो इतना क्लियरली यू कैन मेक अ डिस्टिंक्शन. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में पूरा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है और तुम्हें बिल्कुल अलग अलग एनालाइज करके अलग अलग देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए. वन शुड नॉट बी एबल टू कंफ्यूज. इसीलिए कैसी नॉलेज चाहिए? कंसेप्चुअल, विच शुड नॉट बी चैलेंज्ड. कंफ्यूज नहीं हो सकते. ठीक है? यस.
पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर्स होते हैं मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो एमपीज होते हैं, और उसमें डिफरेंट पार्टीज के लोगों को इन प्रपोर्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन वो होता है, सब होते हैं, सब होते हैं। वहीं पे तो पार्लियामेंट है, ठीक है।